तो क्या सीखा हमने कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही क्या था कि कौन से टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम चूज करें। तो क्या फैसला लिया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बेंट टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर, बट मिक्स्ड था। आगे बढ़ते हैं। After adopting the mixed economic system, the next important step of the government was to revive the poor, backward, and the stagnant economy inherited from the British rule. For the development of the Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy, known as economic planning. तो उन्होंने अब क्या शुरू करी? Economic planning. Economic planning can be defined, important hai, define economic planning. Economic planning can be defined as making major economic decisions, what to produce, how to produce, and for whom to produce, by the conscious decision of a determinate authority. ऐसे नहीं कि अपने आप ही डिसीजन ले ली जाएंगी, अथॉरिटी फॉर्म की जाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएं, डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं, प्रॉपर प्लान तरीके से डिसीजंस ली जाएं on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole. The Industrial Policy Resolution IPR 1948 and the directive principles of the Indian Constitution assigned a leading role to the public sector. IPR 1948 and the directives of Indian Constitution, majority role, primary role or the major role was given to the public sector. Private sector was also encouraged to be a part of the plan efforts, but major role initially was given to the public sector. कहाँ पे mentioned है? IPR, Industrial Policy Resolution of 1948. To make economic planning effective, very important. When was the Planning Commission set up? When was the Planning Commission set up? To make economic planning effective, the government of India set up the Planning Commission in 1950. Who was the first chairman of the Planning Commission? Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Who is the chairman of Planning Commission? It is the Prime Minister. So who is the chairman currently? Mr. Narendra Modi. बट अब प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो चुका है, अब क्या है? नीति आयोग आ जाएगा पॉइंट। अभी हमने क्या सीखा? When was the planning commission set up? 1950. Who was the first chairman of the planning commission? Pandit Jawaharlal Nehru. Why was the planning commission set up? So that development policies can be executed in a planned manner. The purpose of planning commission was to carefully assess the human and physical resources of the country and to prepare plans for the effective use of resources. The planning commission fixed the planning period at 5 years. तो जो planning commission ने 5-year plans launch करे, कह रहे plan का जो duration होता था क्या होता था पहले? 5 years. The Planning Commission fixed the planning period at 5 years, which began the era of 5-year plans. So, when was the Planning Commission set up? 1950. Who was the first chairman? Pandit Jawaharlal Nehru. When was the first Industrial Policy Resolution launched? 1948. तो IPR 1 जो है वो क्या है? 1948. And the directives, उसमें क्या decide हुआ था? Directives of Indian Constitution कि initially the major role has to be played by the public sector. What is a plan? तो planning commission में क्या हुआ? 5-year plans launch हुए. क्या हुआ? Duration of the plan? 5-year plans. What is a plan? Plan is a document showing detailed scheme, program and strategy worked out in advance for fulfilling an objective. तो पहले से डिसाइड हो जाता है कि इस बारी हम ये करेंगे, तो उसका डिटेल्ड प्लान, डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रैटेजी आपको शेयर करनी पड़ेगी कि कैसे आप वो चीज अचीव करने की सोच रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर प्लान का. तो मीनिंग ऑफ अ प्लान, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट showing detailed scheme, program and strategy worked out in advance for
fulfilling an objective. Reason for making plans: planning is done to achieve some predetermined goals. पहले से एडवांस में बना रहे ना प्लान, तो पहले से डिसाइडेड होता है कि इस बार हम क्या गोल अचीव करना चाहते हैं. Within a specified time period, it involves detailed analysis of the problems at hand and making conscious decisions to solve them. So reasons for making plans, so that the objectives can be achieved in a planned manner, in a systematic manner. Conscious decisions plan करके ली जा सकती है. Duration of each plan was made for a period of 5 years. Therefore, they are known as the 5-year plans. The concept of 5-year plans was borrowed from the former Soviet Union. पहले Soviet Union होता था, अब Russia है. Content in plans are planned documents not only specify the objectives to be attained in the 5-year plans, but also what is to be achieved over a period of 20 years. This long-term plan is called perspective plan. So एक तो होता था 5-year plan और एक होता था long plan जिसको बोलते थे perspective plan. उसका पीरियड होता था 20 years. क्योंकि कितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 5 years में अचीव नहीं हो सकते, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, तो वो भी आपको साइमल्टेनियसली शेयर करने पड़ते थे. The 5-year plans are supposed to provide the basis for the perspective plan. Very, very important point. It must be noted that the Planning Commission is no more in existence. On 1st January 2015, a cabinet resolution was passed to replace the Planning Commission with the newly formed Niti Aayog, also known as नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग. Who is the current chairman of नीति आयोग? Mr. नरेंद्र मोदी. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए. प्लानिंग कमीशन 1950, बट द प्लानिंग कमीशन वाज अबॉलिश्ड ऑन 1st January 2015. It was superseded by Niti Aayog. 5-year plans. Just read once कि क्या क्या थे. ड्यूरेशन आपको कोई ऐसा नहीं आएगा कि अच्छा क्या क्या टाइम पीरियड था, कब था, बट 5-year plans. अभी लास्ट जो था 12th प्लान था 2012 to 17. अब 12 में तो स्टार्ट हो गया था, 1st January 15 को आया ना प्लान नीति आयोग, तो वो वाला प्लान कंप्लीट हो, उसके बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान्स शुरू करे. अब क्या 15-year प्लान्स होते हैं, कह रहे 5 साल बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड है ग्रोथ के लिए, कोई भी चेंज दिखाने के लिए, कोई भी. अब 5 साल में तो इनके फ्लाईओवर नहीं बनते, मतलब होता ना कि क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन से पहले तो कितने सारे अप्रूवल्स होते हैं, काम शुरू होने से पहले ही बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो अब 15-year प्लान, तो जस्ट रीड कि सारे 5 year नहीं थे, कुछ एनुअल प्लान्स आए थे ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बीच में एनुअल प्लान्स भी आए थे. ये देखो ना, बाकी सारे तो 5-year प्लान्स थे, बट ये क्या था 66 to 67, 67 to 68, 68 to 69 एनुअल प्लान्स आए थे ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. The 5-year plans have also taken care to ensure that the weaker sections of the population benefit from the economic progress of the country. The first 5-year plan was launched by our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in the Parliament. It was launched for a period starting from 1st April 1951 ending on 31st March 1956. तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था, 1st April 1951, 5 साल का था, up to 31st March 1956. फर्स्ट पता होना चाहिए, लास्ट पता होना चाहिए, इनका एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता होना चाहिए. लास्ट 5-year plan 2012 to 17 was India's last 5-year plan. ठीक है जी. In between these years, some annual plans were also introduced due to good political instability. स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, तो 5-year प्लान उस टाइम पे नहीं बन सकता था. Each 5-year plan listed the basic goals
of India's development which served as guiding principles of Indian plan. तो हर एक 5 ईयर प्लान का अपना एक गोल होता था, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता था. कॉमन ऑब्जेक्टिव्स तो चलते ही थे, बट हर बारी एक एरिया ऑफ फोकस डिफरेंट होता. फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1st April, you have to be precise, 1st April 1951. उसका ड्यूरेशन क्या था? 1st April 1951 to 31st March 1956. 12th 5 year plan, 1st April 2012 to 31st March 2017. Planning Commission, Vedansh, Planning Commission has been superseded by? Planning Commission has been superseded by नीति आयोग. नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? 1st January 2015. Who was the first chairman of Niti Aayog? पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मा. ऐसे बात करो ना. अभी मैंने क्वेश्चन किया, who was the first chairman of नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट देंगे तो ठीक है जी, श्री नरेंद्र मोदी. ओके जी, अभी एक सेकंड.